Good morning, student. We start class 9th physics. Student, in class 9th physics, in previous video we explained about speed and uniform and non-uniform motion, etc. In this video we cover velocity. Velocity equal to distance in a given direction upon time. Distance in a given direction per unit time is known as velocity. Distance in a given direction per unit time is known as velocity, and the other formula for velocity is displacement upon time. It means displacement per unit time is known as velocity. Displacement per unit time is known as velocity. SI unit of velocity मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर अपॉन टाइम की सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -1, और स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, यानी सेंटीमीटर सेकंड की पावर -1. दिस इज स्मॉलर यूनिट. एंड नेक्स्ट इज बिगर यूनिट. इट मीन्स बिगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन किलोमीटर अपॉन आवर, यानी किलोमीटर आवर की पावर -1. इट इज बिगर यूनिट. तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट पर टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. फॉर एंड SI यूनिट इज मीटर अपॉन सेकंड, यानी मीटर सेकंड की पावर -1, एंड स्मॉल यूनिट इज सेंटीमीटर सेकंड की पावर -1. बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर. स्टूडेंट्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ. इट मीन्स वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. स्टूडेंट, स्पीड्स गिव्स आइडिया ऑब्जेक्ट हाउ स्लो एंड हाउ फास्ट, एंड वेलोसिटी also gives idea object how slow and how fast, but with direction. So speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. इसके next is speed and velocity are not always equal. Speed and velocity are not always equal. Speed and velocity are not always equal. This is home and this is shop. For example, distance between home and shop is 100 meter, and time taken from 100 meter distance cover is 50 seconds. For example, one boy is going from home to shop and return back after taking some material, then total distance
100 plus 100, it means 200 meter. Total time 50 second plus 50 second, it means 100 second. Then distance and time is this. So speed is distance upon time, it means 200 upon 100, it means 2 SI unit is meter per second. Student, velocity is displacement upon time. Displacement is person initial point is this, after that stop, and final is this. So initial point and final point are same, and the definition of displacement is the distance या path length between initial point to final point. यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो पाथ लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो उसमें इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, क्योंकि पर्सन यहाँ से यहाँ जाता है फिर रिटर्न बैक होता है. तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 अपॉन टाइम 100, यानी 0 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट question related to velocity and speed formula. In this question, a car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate speed and calculate velocity of the car for this journey. Total distance 200 km and total time 5 hours. Speed equal to distance upon time, and distance is 200 and time is 5 hours. 5 4 is 20, 40 kilometer per hour is the speed, and velocity equal to distance in given direction upon time. Distance is 200 km towards north, and time is 5 hours. Then 5 4 are 20, 40 kilometer per hour towards north is the value of velocity. Student, in this question, speed and velocity both are equal, but speed is a scalar quantity, so does not require any direction. So the answer of speed is 40 km per hour, and velocity is a vector quantity, and the answer is 40 km per hour, but with direction, it means towards north.